press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's class. My dear students, today we are going to discuss all the difficult word meanings of the chapter The Sound of Music. Yes, my dear friends, The Sound of Music by Deborah Cowley. Deborah Cowley, actually, The Sound of Music is a part of 2 chapters. Getting it? It is a compilation of 2 chapters. The first one is about Evelyn Glennie listens to sound without hearing it, and second part is about Bismillah Khan. So this is the compilation of 2 chapters, and we will discuss meanwhile all the word meanings and the basic summary also in between. Though for summary we will make the different chapter different video. Okay, so let's start. The first word, and I'm sure these words will be helpful, क्योंकि हम स्टार्टिंग में जब वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं तो वर्ड मीनिंग्स फिर बाद में लेटर ऑन हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं चैप्टर को पढ़ने में. वी गेट रियली ईजी वेल वी रीड द चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. So the first word in the same series, account. Account means description, means explanation, वर्णन करना किसी चीज़ का, right? The next one is physical. Physical means bodily. Obviously we know about the physical. Disability. Disability means handicap. The one who is disabled to do anything else, like disability, handicap. Success, achievement. Rush means hastiness, भाग दौड़, जल्दबाजी, rush. जोसल, G-O-S-T-L-E, जोसल मीन्स पुश रफली. हसल बसल जो होता है दैट काइंड ऑफ थिंग. जोसल रफली पुश करना, किसी को धक्का मुक्की करना. व्हेन वी बोर्ड द ट्रेन, जब ट्रेन वगैरह हम चढ़ते हैं तो उस टाइम जो धक्का मुक्की काइंड ऑफ होती है भीड़ वाले इलाके में, दैट वी कॉल जोसल. ओके, द नेक्स्ट वन इज अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड मीन्स अंडर द सर्फेस. ऑब्वियसली अंडरग्राउंड जो अंडरग्राउंड वाटर है, लाइक अंडरग्राउंड रूम्स हैं, सो दैट इज अंडर द सर्फेस. नेक्स्ट वन इज स्लाइट. Slight means here the word is slim, patla. Nervous, that kind of a nervousness you know very well, that is agitated, A-G-I-T-A-T-E-D. Next one is vibration. Vibration means continuous shaking movements. See friends, मैं आपको बता दूं कि जो first part है, and basically we talk about the message of the chapter, तो the basic story that conveys the message that nothing is impossible if one has the will. कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपके अंदर इच्छा है कुछ करने की. एंड द एबिलिटी टू वर्क हार्ड, वन कैन अचीव फिनोमिनल सक्सेस. कोई भी आदमी अपनी सक्सेस को कंफर्म कर सकता है, ले सकता है, इवन विद फिजिकल डिसएबिलिटीज़. अगर आपके अंदर फिजिकल डिसएबिलिटीज़ है तब भी आप फिनोमिनल जो आपकी सक्सेस है, मीन्स एक मेन सक्सेस आप ले सकते हो. कब? ओनली इफ़ यू स्ट्रांगली एस्पायर्स टू इट, व्हेन यू हैव द डिज़ायर टू वर्क, ओनली देन यू कैन गेट इट. सो हार्ड वर्क मिलना चाहिए. दिस इज़ द मैसेज एक्चुअली, एंड दैट मैसेज क्लियरली प्रूव्ड बाय एवलिन ग्लेनी, जो एक छोटी लड़की होती है इनिशियली, और जो बहुत ही मतलब डेफ एंड डम है, अनेबल टू सी, अनेबल टू लिसन, एंड स्टिल सी बिकम वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन. सी प्लेज द मल्टी परक्यूशनिस्ट दैट वी कॉल, राइट? सी बिकम्स. सो दिस इज द स्टोरी एक्चुअली. सी इज डेफ at all. The next one is about vibration, continuous shaking movements. Approaching means coming, and prestigious means receiving widespread. Prestigious means सम्मान नहीं होता actually, respectable. So here receiving widespread respect and admiration, that is known as prestigious. P-R-E-S-T-I-G-I-O-U-S, prestigious. Okay. The next one is became progressively worse. So the next one is deteriorated. Deteriorated means actually किसी चीज़ का घटना होता है, किसी चीज़ को डिक्रीज होना. तो became progressively worse, चीज़ का progressively worse घटना हुई, ख़राब होना और ज़्यादा. So that is specialist, expert, discovered, found out, impaired, weakened, damage, destroy, determined, resolved, confirmed, है ना. pursue, फॉलो करना, मीन्स किसी भी चीज़ को फॉलो करना, परस्यू करना, दैट इज़ नोन एज परस्यू, फॉलो. ये सारे वर्ड्स वो हैं फ्रेंड्स जो आप अगर इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप एक बार भी NCERT बुक उठाएंगे तो आपको एक भी वर्ड में, एक भी लाइन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. द नेक्स्ट वन इट सेज दैट xylophone. xylophone a musical instrument होता है with a row of wooden bars of different lengths, that is xylophone. Percussionist
Percussionist. Percussionist means a person who plays the drum and tabla, etc. Like the as I told, musical instruments. The next one is spotted, means recognized, right? Tuning, adjusting a musical instrument. Tuning means एक musical instrument को tune करना, adjust करना अपने sound के according. Okay. The next we will read. Academy means institute. Solo, a piece of music, means when you when you perform someone as a single, as a song, single one. So dance for one performance. Captured, seized. Multi-percussionist. Multi-percussionist means here a person who plays lot of instruments. Percussionist जो instruments बजाता हो. Multi means वही है, variety, बहुत सारी चीज़ें. Hectic, full of frantic activity, means tired, you can say. Schedule, this is called schedule and schedule both. Schedule we call in American accent, schedule we call in British. So here this is about the American British accent too. There are many words, there are difference in the spelling also, in the pronunciation too. Schedule means here program, क्या schedule बना भाई तुम्हारा, right? The next one is intriguing. Intriguing means fascinating and curious, means quite attractive, and effortlessly means at ease. Okay, so up to this we have discussed. Let's move towards the next one. So next one, it says here daunting, DAUNTING. Daunting means frightening, means drane wala, right? Aspiring musician, a person who wants to be a musician. Aspiring, aspirants होते ना, कोई भी पर्टिकुलर काम करने वाले, चाहने वाले. So here a person who wants to be a musician. Profoundly means intentionally, intensely. Severely deaf, without hearing powers. Deaf, you know, severely deaf means completely deaf. This is not deaf, this we call deaf. Deaf and dumb. Deaf and dumb. Gunga behra, without hearing powers. Gradual, step by step. Dhire, slowly. By quite a while, for a short period. By quite a while, for a short period. Conceal. Conceal means keep secret. Conceal का उल्टा क्या होता है? Antonym क्या होता है? Reveal करना. Synonym क्या होता है? Hide करना. So keep secret means here hide करना, छिपाना. Right? So that is conceal. The next one. Percussionist we have discussed. Spotted, recognized. Tuning हम पढ़ चुके हैं. To sense, to realize. Determination, resolution. Orchestra, a group of instrumentalists. Orchestra क्या होता है? जब बहुत सारे instrumentalists अलग अलग जो instruments हैं and they play together, that is known as orchestra. Audition, audition देना, you know, AUDITION. Audition means give a short performance to decide whether one is good enough for a role or not. Audition देते हैं हम किसी movie के लिए, तो they decide कि हम इस particular role के लिए सही भी हैं या गलत हैं. So that is audition. Okay. The next one is schedule we have discussed. Effortlessly also we have discussed. And flawlessly, correctly, without fault or mistake. Lilt means singing tune. Pause, POURS, flow in steady stream. एक flow में किसी चीज़ को उड़ेलना होता है actually वैसे तो, right? Tingles. Tingles means cause a slight pricking sensation. Cause a slight pricking sensation. Next one is leaning. Leaning means bend करना, झुकना. Resonance means vibration, or bare means naked. So these are the word meanings which are going to be very really important for you all. I must say, once you just go through all the word meanings and after that once you read the text, आप एक बार जब टेक्स्ट पढ़ेंगे, so there won't be any problem at all. It's my guarantee, because यहाँ पे वो सारे वर्ड्स लिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूरे चैप्टर के, यानी कि द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, तो फर्स्ट पार्ट है ये, वहाँ से लिए गए हैं एंड दीज आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल. सो let's meet in the next video with the next word meaning, next chapters, and soon we are going to start the summary of the next chapters of every chapter actually. So stay tuned.